Good morning, everyone. In today's lecture, we continue the next point. Before the next point, we study what we have studied in last lecture. We have studied in last lecture the essential of orders. Under this essential of orders, we study the direction necessary following issue. It means buyer or seller, quantity of buy or sold, delivery month, then underlying assets, specific stocks like our index. In this specific stock and index, we study for the following money market website. What is specific stock and what is index stock? Then we have here mentioned the specific Accenture, and his name is National Stock Exchange and Bombay Stock Exchange. And types of order. Today we have studied briefly what is type of orders. Under this, the first point is market order. It is the most frequently used for the order which is appropriate when the decision has been taken in initial or close of position. It is elimination the possibility of chasing the market. Such order are executed at the best available price at the moment. It means the market order means the number of orders which is chase or the phase the marketing other market commodity. म्हणजे थोडक्यातच तो काय बोलण्याचा प्रयत्न करतोय की just the number of order, it means your new brand order, your new company order, it means in short the example of two number of companies. As per जसं मी लास्ट लेक्चरला बोललो होतो की we are following okay. If you follow the money control website and under the decided to study the Reebok. The study of Reebok company and study of First Strike company. The both are the market capture. आणि दोघांमध्ये काय आहे की Reebok आणि MRF the similar product बनवत आहेत, but त्यांची brand quality it's main the competitive in the market. It means the elimination to the possibility chasing the market, chasing the market. Such order is executed at the best available price at the moment. And the executive the best price are available at the market. What are the limit order? Limit order. A limit order is an order to buy or sell at the distinct specifies price limit order to buy or place below the ongoing market rate, while the limit order or sale order placed above the ongoing market rate. Since the market may never rise or fall enough the targeted limit order. It means, in short, the limit order or buy order placed below the ongoing market. It means the limit can the limit order the graph percent of the cost price cost, then the less price. It means the graph is moves to the downward position, downward side. On this type of market is called the limit order.
याच्यामध्ये काय होणार आहे, बायर्स आर टू लिमिट, the buyer has to limit to buy the product on which the less rate of product, then the ongoing market rate will be the limit orders. कधी तो लिमिट ऑर्डर मध्ये येणार आहे, the ongoing market rate are placed above होईल, and it become the above where the order is limited. It means the example of bear purchase, bull and bear. Okay, bear purchase. Bull means high rate. Bull, bear is a commodity market agent name. Commodity market agent name. The bull means bull जो तुम्हारा बैल होता है, कमोडिटी मार्केट या शेयर मार्केट के बाहर देखो उसका एक स्टैचू लगाया हुआ है, बुल. इट मीन्स क्विक एंड फास्टर. इट मीन्स क्विक एंड फास्टर. इट मीन्स ऐसा ब्रोकर जो क्विक रहता है, हाई रेट पे खरीदता है, देन उसको स्टोर करके रखता है, देन और हाई रेट होने के बाद उसको सेल करता है. इट मीन्स 100 रुपए का 150 रुपए हुआ तो खरीदता है, एंड फ्यूचर ओरिएंटेड इट मीन्स दैट ही बिकम्स 150 का 200 हो जाएगा, आणि जेव्हा 200 रुपये होतो तेव्हा तो विकून टाकतो. इट्स द बुल बायर, द बुल ब्रोकर बायर. देन द रिमेनिंग आर बेअर. आणि द बेअर असतो तो कसा करतो, वस्तूची कमोडिटीची किंमत कमी होण्याची किंमत बघतो, लिमिट ऑर्डर मध्ये तो काम करतो, आणि द लिमिट रेटवर परचेस करतो, आणि हाय रेट अनलिमिट रेटवर तो सेल करतो. इट मीन्स इफ 100चं 50 रुपीज झालं, 100चं 50 रुपीज झालं, ही बाय द नंबर ऑफ शेअर्स आणि तो स्वतःकडे ठेवणार. इट इज 50चं 100 रुपीज झालं तर ही कॅन सेल आउट द गुड्स इवन थ्रो. Okay, even though the market may touch the limit price, this does not guarantee the customer for a fill at that price. It means कि price जे fill होणार आहे, it means the bull किंवा bear हे दोघं जे adjust करणार आहे, the adjustment in future, it means the rise or amount or decrease or amount, it is affected on his buying behavior. Okay, when buying is the order price is lower than the current market price and buyer limit. In limit order मध्ये काय असणार आहे, the buying price is lower than current price. It means low cost. It means मी आधीच बोललो की बुल आणि बेअर मध्ये जे स्टडी केलं तर बेअर प्राइस. बेअर मीन्स भालू. भालू कैसा होता है, का त्याला भालू बियर बियर असं म्हणतात माहितीये का? तर रीजन इज भालू सर्दियों में सो जाता है, सर्दियों में, और बरसात के बिगिनिंग तक या गर्मियों के दिनों में जागता है, और 6 महीने वो सोया हुआ रहता है जब तक उसको सर्दी लगती है. इट मीन्स द लो कॉस्ट 6 मंथ ही डिसाइडेड कि प्राइस बढ़ेगी और सुस्त गुंडे की तरह एक जगह पड़ा रहता है, इसलिए उसको बियर कॉस्ट बोला जाता है या बियर. ओके, वरना तुम लोग बोलेंगे कि सर को ये लगा बियर को लेके बात बोल रहे थे. नो, इट्स अ बेयर. भालू मरा, उसके बारे में बोल रहा हूँ मैं. तो उसके बारे में क्या बोला हुआ है कि एक होता है बैल, बुल. बुल जो बुल होता है उस टाइप का जो बंदा रहता है, या फिर बंदा, इट मीन्स द पर्सन, द ब्रोकर ऑफ शेयर मार्केट. जैसे बुल मार्केट में जो होता है, तो बुल क्या होता है, वो बैल की तरह होता है. जैसे बैल में कितनी फुर्ती रहती है, 24 आवर रेडी रहता है फॉर हार्ड वर्क. ही इज रेडी फॉर हार्ड वर्क और हाई रिस्क. और वो रिस्क क्या उठाता है, हेवी रेट, महंगे रेट पे खरीदता है और उससे भी महंगे रेट पे बेचने. ठीक है, एक असतो बैल, मराठीमध्ये सांगतो सिम्पली, एक असतो बैल आणि एक असतो भालूला मराठीमध्ये काय म्हणतो, एक असतो भालू. ओके, तर जर बैल कसा असतो तो 24 तास ऍक्टिव्ह असतो, त्याच्यावरून तर बुल ब्रोकर हा नाव बनलेलं आहे, बुल ब्रोकर इन शेअर मार्केट. म्हणून त्या बैलाचा जो स्टॅच्यू आहे तो तुमच्या शेअर मार्केटच्या, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजच्या किंवा आरबीआयच्या बाहेर असं बनवलेलं आहे. इट मीन्स वी आर ऍक्टिव्ह फॉर 24 आवर्स, रेडी फॉर हार्ड वर्क. आणि दुसरा एक आहे भालू, बियर, त्याचं एक स्टॅच्यू आहे. एक तो पण एक्झाम्पल आहे, कणाचं एक्झाम्पल आहे. बियर इज एक्झाम्पल ऑफ स्लो वर्क ब्रोकर. स्लो वर्क का, तो भालू सारखा असतो. तो काय करतो, तो 6 महिने झोपलेला असतो. जसा भालू कसा गारठ्यामध्ये झोपलेला असतो, गारठ्यामध्ये तो बाहेर येत नाही, तो कुठेतरी एका जागी लपून असतो. 6 महिने तो बाहेर येत नाही, झोपलेला असतो. तसा हा 6 महिने जेव्हा लो कॉस्ट मार्केट असतो, हाय कॉस्ट असतो,
तेव्हा हा बाहेर येणार नाही. आणि जेव्हा 6 महिन्यानंतर कॉस्ट उतरलेली असेल, लो कॉस्ट झालेला असेल, नंबर ऑफ शेअर तो परचेस करतो. आणि वेटिंग लॉंग टाइम 6-7 महिने वेट करतो. कशासाठी? रेट वाढेल आणि मग मी विकली. हा लिमिट असतो एक लिमिट ऑर्डर सिस्टम. ओके. फॉर एक्झाम्पल, आता एक्झाम्पल मध्ये बघा, white with the market trading at rupees 5,800, current the next month Sensex Nifty an order to buy one next month Sensex Nifty is 5,750 on limit. The order can be only filled at the stake price 5,500 or low. It means एक lower एक्झाम्पल त्याने घेतलं नाही. हे एका व्यक्तीकडे 5,800 आहे ट्रेडिंग कॉस्ट किंवा ट्रेडिंग मटेरियल आहे आणि निफ्टीचं टार्गेट सेन्सेक्स टार्गेट जो मी काल तुम्हाला बोललो होतं टार्गेट अमाउंट इज 5,770 आहे. इट्स बिकम टू रेडी ते मॅक्सिमम 5,770 देऊन ऍज अ लोअर कॉस्ट त्याच्याने कमी होऊन जर आपल्याला देऊन ते सेल होतोय तर मी घ्यायला तयार आहे. इट्स कम्पेअर टू इट्स बिकम टू हायर रेट. इट्स बिकम टू हायर रेट इज नॉट बेटर फॉर मी आणि आपण लोअर कॉस्ट मध्ये घेणार नाही. देन सेकंड एक्झाम्पल इज स्टॉप ऑर्डर. सेकंड एक्झाम्पल इज स्टॉप ऑर्डर. स्टॉप ऑर्डर क्या है? We use for three purposes. The first is to minimize control or loss on long short position. In short, थोडक्यात study बोलले नाही. Stop order means order ला थांबवणं. It means you are the trading, future trading आहे to break the order or trading system. ते तुमचं जो planning आहे तो wrong आहे. त्याला stop करणं. In short, stop minimize the control the loss or long short position. It means trigger to stop loss. Loss was वाचवणे. Stop protect a profit on an executing long and short position called trading stop. It means long short म्हणजे कोण? Buyer and seller. Buyer and seller. ह्यांच्यामधली ऍक्टिव्हिटी थांबवणे. It means called trading stop. Trading म्हणजे buy and sell. ट्रायल करणे. Okay. To initial a new long or short position. New contract बनवणे. New long or short position. Okay. Similar to limit orders. New. So a buy stop order is placed above the current market rate and a sell stop order is placed below the current market. Buy कधी होतो? Buy म्हणजे विकत घेण्याचं करंट मार्केट रेटवर डिपेंड आहे की तो स्टॉप करेल की नाही. इट मीन्स त्याला आधी रेट लो होता म्हणजे ही डिसाइडेड टू बाय. इफ द रेट इज हाय ही स्टॉप टू बाय. थोडक्यात होत आहे की आपल्याला आधी पाच एक महिन्याआधी एक वस्तूची किंमत 5,000 रुपये असेल. The share market मध्ये the share is rupees 5,000 rupees and today's the share is rupees 10,000 rupees and you are not capable at rupees 10,000 to buy the share. Then you are the stop this order. हे मला आता नाही पाहिजे, मी नंतर घेईन. As compared to the 5,000 चं 4,000 झालं, you more order. एकच्या जागी 2 घ्या. ते आणखी 3,000 टाकून 4 दोन्ही 2 घेऊ शकता. Okay. When buying it, the order price is higher than the current market price, it is a buy stop. Why? Buying if the order price is higher than above current market price. कधी होता है? Order price is higher than above current price. Current price means the fractional price, the current price, the contract price. जर high होता है, it means the buy stop price. Buy विकत घेण्याचे stop price होते. Simply. आज वस्तू 5 रुपयाची आहे, पुढे ती 10 रुपयाची होते. तर 5 रुपयाची होती तेव्हा एक्सपेक्टेशन होते की आपण घेऊ. 10 झाली तेव्हा फ्युचर ओरिएंटेड नॉट एक्सपेक्टेशन. द रेट आर हाय. ओके. बाय इज स्टॉप. परचेस करना आपण स्टॉप करतो. फॉर एक्झाम्पल, with the marking trading, current for the month of Sensex is 5,800. Currentला 5,800 आहे. One order buy for a month. एक महिन्याने घेतलं आणि एक महिन्यानंतर त्याचे जेव्हा स्टॉप होणार आहे म्हणजे तो कॉन्ट्रॅक्ट संपणार आहे इन फ्युचर, तेव्हा जर त्याच्याकडे 5,820 रुपये मागितले, 5,820, स्टॉप कॅन बी ओनली फेल्ड ऍट द मार्केट. फेल झाला तो, कॅन्सल झाला तो, पिक्चर इथे कॅन्सल होणार, तो ऑफर तो कॅन्सल करणार. After the market rate or is the offer at 5,820 or higher किंवा त्याच्यात जास्त मागितलं तर तो वस्तू बाय होईल का? बिकॉज द कॉन्ट्रॅक्ट इज डन इन द 5,800. एक वस्तू 5,800 ला भेटणार होती आणि घरी पोहोचल्यावर ती 5,820 ला भेटते. तर त्या 20 रुपयासाठी जास्त देण्यापेक्षा मी ती वस्तूच घेणार नाही.
Commodity market is most to 1 paisa. When selling it, order price is lower than below the current market price is same stock. Then the change, when selling it, the order price is lower than below the current market price is a sales stock. Sales stock बद्दल काय बोलणार आहे? जसं बायर रेट वाढलं ते घ्यायला तयार नाहीये, तसंच सेलर रेट कमी झालं तर घेणार नाहीये. इट मीन्स त्याने आधीच बोललं ना, बायर इक्वल टू सेलर. आपण आधीचे 2 लेक्चर आधी आपण ते वाचलंय. Always we are found in future contract buyer equal to seller. If buyer is equal to seller ची amount, the middle point amount is 5,800 rupees and the buyer is become to 5,820. नाही चालणार, is not equal to seller. And also here less than होते म्हणजे 5,780 होते, 20 रुपयाने कमी होते. Also नाही चालणार because here also no buyer equal to seller. म्हणजे जो फॉर्म्युला आहे तुमचा कमोडिटी मार्केटचा बायर इक्वल टू सेलर इज नॉट परफॉर्मिंग हियर, then contract is stopped here. Then stop limit order. Stop limit order. A stop limit order provides two price with the initial having more control over the price, which is to stop in trade. The first part of the order written like the above stop order, and the second part is specify the limit price. If indicate the one of the stop target, then investor does not wish to order to be filled beyond the limit price. Stop limit order are normally not used when trying to exit position. If a customer does not given the limit price, then the stop price and the limit price are effectively the same. In short, त्याने ह्या पॉइंट मध्ये काय एक्सप्लेन करायचं बोललं नाही. एक्झिट प्राइस अँड स्पॉट प्राइस आर डिफरंट. स्टॉप प्राइस मध्ये आपण स्टॉप कधी करणार आहोत, तो जो आपले डिमांडिंग गुड आहे, जो डिमांडिंग गुड आहे ॲट अ रेट and which rate you have decided for the future order. On this rate in future तुम्हाला नाही भेटत आहे, then you stop to trading there. You stop to trading there. म्हणजे तुम्ही थांबता विथ ट्रेड करायला. ॲज कम्पेअर टू एक्झिट नाही होत, म्हणजे कॉन्ट्रॅक्ट तोडत नाही आहात, तुम्ही म्हणताय की मला तोच रेट पाहिजे जो रेट फिक्स आहे. बायर इक्वल टू सेलर 5,800 चं इन फ्युचर मी 5,800 देणार. You just stop there. The stop is on 5,800. In future it's become 5,800 to 5,900. No, I'll stop there. My stop is 5,800, the fixed amount. Okay. Then stop close order. Close order means exit order. Okay. The stop close order is a target only the market touch the stop level and the close the trading session. Okay, means close candle. Okay, such order are given to the prevent stop target being the executed due to the sudden intraday market fluctuation. Intraday means one trade share market one day. सकाळी 10 ला शेअर विकत घ्यायचं, संध्याकाळी 4 ला विकायचं. ह्याच्यामध्ये जो 4चा जो रेट असणार आहे संध्याकाळी 4चा 4 PM चा, इट इज स्टॉप ऑर्डर. ओके, इट इज स्टॉप ऑर्डर. या स्टॉप क्लोज ऑर्डर. ओके. मार्केट इफ टच ऑर्डर. टच ऑर्डर मीन्स करंट पोझिशन ऑर्डर किंवा touch to current position. Okay. Order is used to the entire the market initial at a trade. Immediate trade. It is similar to the limit order since the providing for a buy at a price below current market. Current market से double rate or the sell at the price above current market. It means जो main middle point rate आहे त्याला touch करून जाणार आहे जवळपासचा middle point. It means I'm explaining by website. Money control.
I'm explaining by the sharing this website. This website we are follow the Bharti Airtel Limited trade. Okay, I'm explaining the closing point or the graphical study. Okay, this graph is help you for your point. The point is close order, close to touch order and all. It means जब ग्राफ के इस लाइन से जब वो टच करके जा रहा है, तो व्यू टच के अबाव से जा रहा है, इट मींस बायर क्लोजिंग ऑर्डर एंड इट मींस जो ग्राफ की स्टडी हो रही है अभी अबाव जाना एंड लेस जाना, तो some points are we recognize here. Okay, which one some point? The first is the market if touch order. वन पॉइंट कौन देखेंगे, तो कौन कौन से पॉइंट के ऊपर हमने स्टडी किए थे. तो फर्स्ट इज स्टॉप ऑर्डर के अंदर द फर्स्ट इज स्टॉप लिमिट ऑर्डर. स्टॉप लिमिट ऑर्डर मींस लिमिट ऑफ योर लोअर. अब यहाँ देखो ये चेंजेस है, तो लो लिमिट कब है 535 के ऊपर, है ना. लो लिमिट 5, ये लो लिमिट है. ये वॉल्यूम ऑफ स्टॉप ऑर्डर्स है, ओपन ऑर्डर, क्लोज ऑर्डर. ये भारतीय एयरटेल का एक्सप्लेनेशन है. ओके, अब यहाँ पे उसका हाई रेट 512 है, लेकिन ओपनिंग या बिगनिंग इज 5011 है. 5011 यानी 511 से 512 रुपए 50 पैसा होना इज ऑल्सो हाई. और क्लोजिंग रेट उसका 502 होना इट्स ऑल्सो लो कॉस्ट है. इट मींस द लिमिट ऑर्डर में द लिमिट इज द मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट के लिए जो एवरेज लिमिट है वो 511 है. एंड द हाई लिमिट इज, हाई लिमिट किसके लिए अच्छी होती है? फॉर सेलर, नॉट फॉर बायर. इट इज 5112 फॉर 50. अभी अगर तुम्हें किसी ने प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें चीज कोई भी जो कमोडिटी बाय एट रुपीज 511 रुपीज, और दूसरे दिन आके तुम्हें बोलता है आई एम सेल एट रुपीज 512.50, देन यू एक्सेप्टेड 2 रुपीज 50 की वजह से जो तुम्हारी कंपनी को लॉस होने वाला है, ये लॉस तुम सफर नहीं कर सकते हो, और उस सफरिंग लॉस की वजह से यू आर रिजेक्टेड दिस ऑर्डर. और अगर यू आर डिमांडेड, तुमने किसी को डिमांड किया, तो किसी ने बोला मैं मैक्सिमम 5011 में सेल कर सकता हूँ, और उस सेलर को तुमने तुम्हारी ऑर्डर के हिसाब से यू आर ऑफर द अमाउंट ना 498.20, 498.20. कैन ही सेल यू गुड्स? नो, बिकॉज ही आल्सो इफेक्टेड विद बिजनेस. दैट्स व्हाई यू आर कॉलिंग बायर इक्वल टू सेलर, यानी बायर को भी 511 रुपए मिलने चाहिए, सेलर को भी 511 मिलनी चाहिए. Which means या स्टॉप लिमिट ऑर्डर को कैसे एक्सप्लेन किया गया है, समझ में आ रहा है ना? फ्रॉम दिस. देन क्लोज ऑर्डर. क्लोज ऑर्डर में क्या रहता है? इट्स क्लोजली टू टर्नओवर, क्लोजली टू टर्नओवर. अभी उसमें बोला है स्टॉप क्लोज ऑर्डर is the target only if the market touch to the stop level. Market touch to the stop level means 559 or 560. Okay, touch to close यानी देखो 33, 35 touch to the close, इतने टच था, इज क्लोज क्लोज ऑर्डर. ओके, देन मार्केट इफ टच ऑर्डर. अगर मार्केट टच ऑर्डर को गया यानी इक्वालिटी को गया तो क्या होगा? इट मीन 511 का 511 हो गया. इट मीन हियर 343, 348 इज टच टू द ऑर्डर. ग्राफ को मैं टच करके बता रहा हूँ कि ग्राफ को टच करके. If market is touch order, the market is touch order used to enter the market initial at the trade. Initial trade यानी beginning के trade को जाता है. Okay? If the similar to the limit order since is the provide for a buyer at a rate of selling cost. यानी equality को देता है at a price of below to the current market के rate को लेके जाता है. 348, 348. Okay? Then market on close order. The next point is market on close order. Market on close order means the broker is directed to the executive order at available closing price. इसमें closing price के ऊपर जाता है market to close order. यहाँ available to close price इसके ऊपर जो last price मिलने वाली है इसके ऊपर जाता है.
यहाँ क्लोजिंग प्राइस क्या है? इज डायरेक्टली 479. इट मींस ओपन कॉस्ट के 1 रुपी आगे पीछे. इट इज इफेक्टेड ऑन योर बिजनेस. ओके, यहाँ क्या बोला हमारे? क्लोज प्राइस ऑफ मार्केट नॉर्मली द पार्टिसिपेशन रिजर्व्स द राइट टू कैंसल द ऑर्डर अप टू द 15 मिनट्स. ये क्लोज प्राइस में अगर उसको लॉस हो रहा है तो उससे 15 मिनट्स पहले वो ऑर्डर कैंसिल कर सकता है. ओके, देन गुड until the cancel orders. In short, uh, by this graph, I'm explaining, I think so easily. Then I'm explaining the next point. The next point is good until the cancel order. Okay, under the good until the cancel. देखो अभी हमने कौन-कौन से पॉइंट देखे? स्टॉप क्लोज ऑर्डर, मार्केट इफ टच ऑर्डर, मार्केट ऑन क्लोज ऑर्डर. विद ग्राफ मैंने एक्सप्लेन किया. Then here, good until the cancel order. Goods until the cancel order, also called open order, is used to conjugate with limit of stop order. Such an order will remain valid operative until the client cancel the order on its date. It means कब है? कि जब client cancel करता है. और contract experience. It means GTC. It means good until the cancel order does not cancel automatically in the normal process in the order not designed good until the cancel. अगर कोई कैंसल कोई गुड्स डिमांड या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में अगर कहीं मेंशन नहीं होगा गुड अंटिल द कैंसल ऑर्डर, दिस टाइप्स ऑफ कैंसल ऑर्डर इज नॉट कैंसल टाइम ऑफ canceling order. Okay, then special order. What is special order? In such order, there are two simulation order to clear the long and short position in two different months of trading cycle. Okay, then descriptive order में क्या रहेगा? In such order, the broker is given the range rather than specified rate within the which to execute to the order. Such order are used in case and think liquid stock when the organized size is very large. तो first पहला क्या है? स्पेशल ऑर्डर. स्पेशल ऑर्डर में तुम्हारी जो ऑर्डर रहती है स्पेशल रहती है. इसमें 50% अमाउंट करंट मंथ में दी जाएगी, 50% अमाउंट ऑफ योर स्टॉक इज नेक्स्ट मंथ में दी जा सकती है. इट मींस पार्टली पे सिस्टम. बट डिस्क्रिशनरी ऑर्डर में क्या रहेगा? वो डिस्क्राइब करेगा कि उसके पास कौन से ऑर्डर्स है, वो शो करेगा द नंबर ऑफ ऑर्डर एंड यू कैन सिलेक्ट इट. ओके, देन एक्सचेंज फॉर फिजिकल्स. एक्सचेंज फॉर फिजिकल्स में क्या होने वाले ऑर्डर्स? In exchange of physicals, transaction to particular contract such that one party buy commodity and simulator sell the future value. The order partly sell the commodity and simulator buy the future contract. The exchange of commodity consists of exchange transaction where the future contract gets settled clear by the exchange. It means यहाँ commodity to commodity. It means your stock के बदले stock या index stock के बदले index stock exchange करके rate को set किया जाता है. एक्सचेंज करके या फिजिकल चेंज आर नॉट मनी. तो फिजिकल मींस गुड्स के बदले गुड्स. बार्टर सिस्टम को फॉलो किया जा रहा है. बट ये बार्टर सिस्टम ऑफ कमोडिटी. विच वन कमोडिटी? मार्केट कमोडिटी, स्टॉक मार्केट या इंडेक्स मार्केट कमोडिटी. ओके, देन द नेक्स्ट पॉइंट इज one cancel the other. One cancels the other. It means the one cancel the other. Order are also called either or others. The investor speculate to the rate. ये ऐसा पैटर्न कब होने वाला है? इंडेक्स में. जब एक की जगह दो से ज्यादा कमोडिटी होंगी तो वन कैंसल ऑफ ऑर्डर आएगा. इट मींस ये नहीं तो ये नहीं तो ये. द रेट ऑफ आइदर साइड इज करंट मार्केट लेवल. अब रेट पे डिपेंड है. जो अच्छा होगा वो हम खरीदेंगे. फिर से मैं एक बार कमोडिटी मार्केट की तरफ टर्न होता हूँ. For this point, I am explaining from this pattern. The top point is one cancel the other. One cancel the other को explain करने के लिए just भारतीय एयरटेल हमारे पास है क्या? नहीं. तो जिसकी और कौन सी कंपनी है? Also Idea is there. Idea, Vodafone, Idea is there. Okay.
अच्छी सेलुलर कंपनी है, टेली मार्केटिंग में ही है, इसका रेट क्या है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 11 रुपीज। ओके, द ग्राफिकल स्टडी क्या है उसकी 11 रुपी है। अगर इसका रेट 11 रुपी था और इस भारतीय एयरटेल का 51 रुपी था और तुम्हारे पास तुमने क्या सोचा कि जो लो रेट रहेगा वो मैं खरीदूंगा, देन यू आर डायरेक्टली डाइवर्ट टू द वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, वी 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 वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। ओके, वी वाज डायरेक्टली लिमिटेड, इसमें पहले ही बोला वन कैंसल द अदर, वन कैंसल अगर हुआ है तो हमने कैंसिल किसको किए, तो डायरेक्टली कैंसिल टू द एयरटेल एंड डायरेक्टली डाइवर्ट टू द एयरटेल, वोडाफोन आइडिया से हमने एयरटेल को डाइवर्ट कर दिया। Here the volume of sale and rate of sale under the Mumbai Stock Exchange as compared to Bharti Airtel. हमने भारतीय एयरटेल को देखा, यहाँ द रेट ऑफ भारतीय एयरटेल इज 496.70, और वही वोडाफोन आइडिया का 11 रुपी मिला हमें लास्ट में 11.50, 11.15. So which one is best? So I think 11.15 best and selected 11.15. Okay, it is one other. It is one other cost. Then come to the main point of your syllabus. ऑर्डर एग्जीक्यूशन, ऑर्डर एग्जीक्यूशन की पॉइंट की तरफ डिस्कस करते हैं। उसमें एग्जांपल में यहाँ लिख के दिया है, मैंने डायरेक्टली एग्जांपल आप लोगों को बता चुका हूँ। नेक्स्ट पॉइंट आई एम कन्वर्टिंग द नेक्स्ट पॉइंट, इंस्पेरेटिव ऑफ नेचर ऑफ द ऑर्डर एग्जीक्यूटिव थ्रू द ब्रोकर, they are subjected to available of adequate balance in the margin money account of their client. The initial margin requirement for the future contract has different expression, month may be different, and such is necessary to check the initial margin requirement of different future contract. The purpose of the trading even if they are same underlying asset at different expense plan. Order execution means जो एग्जीक्यूट होने वाले ऑर्डर उसके नंबर ऑफ मंथ या नंबर ऑफ ट्रेड या नंबर ऑफ लैंडिंग टाइम रहेगा, बट योर कमोडिटी असेट जो अंडरलाइन रहेंगी, जिस वेरिएशन में रहेंगी, जिस क्वांटिटी में रहेंगी, जिस फॉर्म में रहेंगी, तुम्हें पर टाइम उसी फॉर्म में उनको पहुंचानी है। इन इंडियन स्टॉक एक्सचेंज कैलकुलेट द मार्जिन रिक्वायरमेंट यूजिंग स्पैन स्टैंडर्डाइज्ड पोर्टफोलियो एनालाइजिंग ऑफ रिस्क, which is new and more intelligent way to determine the margin requirement for future trading adopted in survival future market as well as of the world. Okay, today we are study the span, then from next lecture we are starting the advantage of span and the next point pricing future. Pricing future. Okay, all of you, thank you.